हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या नेचर है, कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए और क्या एसेंशियल फीचर्स होते जेनेटिक मटेरियल्स के। डायरेक्टली यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए। एवरीवन लिसन अबाउट इट। देन फर्स्टली व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? Genetic materials means a substance that store all the information transferred to these stored information and express them in offspring is known as genetic material. And mainly genetic material is two types, DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, RNA. What is the essential characteristic of genetic material? जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके असेंशियल करेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द फीचर्स दैट एनी सब्सटेंस है द जेनेटिक मटेरियल एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस. फर्स्ट, that substance which act as genetic material present in every cell. First step. Second one, it must have all information for an organism's cell structure, function, and how he developed and reproduction in a stable form. Means stability is the main role of their hair. Second one, it must have self-replicative property, self-replicate with accuracy, and it must be exist an infinite variety of forms. And second one, last one, it must be capable of undergoing variation and mutation without any changes which affect the organism, but in cases it affected also. Now we will discuss about the genetic materials means component of genetic materials. Here direct with nucleic acid. You everyone know nucleic acid act as a genetic material, and some nucleic acid play other roles, but we have to discuss about only genetic acid material. Now nucleic acid in pus cell. First of all, a scientist that's name is John Frederick Mescher in 1869 discovered the nucleic acid and named it nuclein. Then nucleic acid name was given by R.A. Altman in 1889 due to property of organic basis and inorganic acidic nature. केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं डायरेक्ट वे. एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लिक एसिड. chemical composition of nucleic acid, DNA and RNA means polymer of nucleotide. Nucleotide is mainly further divided into three components. Three or either two components भी हम बोल सकते हैं. First, phosphoric acid or phosphate molecules, that is H3PO4 minus 2 have a negative charge 2 charge present, electric charge minus 2. That phosphoric acid you may see here easily. Then pentose sugar, mainly pentose sugar is furanose type, means 5 carbon chain ring, closed chain या circular ring present 5 membered, and this is furanose type. Pentose sugar is mainly two types, ribose sugar and deoxyribose sugar. Ribose sugar present in RNA and deoxyribose sugar present in DNA. But here we represented now
beta D ribose sugar and beta D2 ribose sugar. What means here? Beta D ribose sugar. Here D, capital uppercase letter of D represent chiral hydroxyl group present towards the right side of the chiral carbons. In case of uppercase L letter represent hydroxyl group present left side of the chiral carbon. These are optically active compounds. We will discuss next further. And beta represent here hydroxyl group present above the plane, and alpha represent here hydroxyl group present below the plane. But in case of a ribose sugar, beta means hydroxyl group present above the plane. देखिए ये वाले hydroxyl group present above the plane, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा. इफ बिलो द प्लेन होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन अल्फा मीन्स इजीली एयर क्लियर अंडरस्टूड. बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज. here 2 deoxy means hydroxyl group is removed by the hydrogen groups. If I represent here alpha D ribose sugars, it means that hydroxyl group below the plane, understand. But in case of nucleic acid, beta D ribose sugar present. Then we will discuss about some properties of pentose sugar. In this book is not given here. First, and sugar molecules is non-planar. Non-planar means sugar molecule. these देखिए sugar molecules है. non-planar means can be bend, और इस bending को हम क्या बोल देते हैं? puckering of sugar is present in this case. And second one, sugar is optically active compounds, means sugars have the optically active chiral carbons is present. And third one property, sugar molecules have dipole moments, means two poles exist in sugar molecules. Then we will discuss about the nitrogenous base. Nitrogenous base is mainly two types, pyrimidines and purines. Generally nitrogenous base are heterocyclic compounds having nitrogen and carbon in ring structure. Pyrimidine mainly three types components: cytosine, uracil, thymine. Uracil is absent in DNA but present in RNA. Then EU. And then thymine is replaced by the uracil in RNA, general characters. And purines की बात करते थे, two purines rings occurs in nucleotides and these in bicyclic in nature. 9 membered rings. Pyrimidines is 6 membered rings, heterocyclic ring. But in case of pyrimidine, 9 membered, we can say 6 membered ring attached with the imidazole rings. But here देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए. एंड प्यूरिन इज एडेनिन एंड ग्वानिन. अब स्ट्रक्चर देख लीजिए. स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन है, बट ये देखिए स्ट्रक्चर, sorry, in this book is not mentioned, but I will give this structure of purine. I have another book. देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए. pyrimidines की cytosine, that's name is 6 membered carbon ring present at 2 position, 2 oxy group present and 4 पे amino groups. It means 2 oxy 4 amino pyrimidine cytosines. Uracil 2,4 dioxypyrimidine
thiamine 5-methyl 2,4-dioxymethyl simple 5-methyl uracil. In case of purines, adenine and guanine. Adenine means 6 aminopurines and guanine 2-oxy 6-aminopurine. Sorry, 6-oxy 2-aminopurines. There is a structure here. You will confuse. There no confusion. अब बात करते हैं लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब व्हाट इज द लिंकर्स जो कनेक्ट कंपोनेंट्स को लिंक करते हैं। देखिए, बात करते हैं लिंक कनेक्टर्स की। देखिए इधर, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन राइबोज शुगर, इनके जो बीच बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड के उनके बीच के बॉन्ड को हम बोल देते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड इसको क्या बोलते हैं, इस कंपोनेंट को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मीन्स नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, उसको क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस कंप्लीट कंपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए। और जनरली दे मे भी सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक फर्दर इन नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।